Good morning, one and all. Today is 2nd March 2021, and we'll be taking common benefits of cloud computing, Unit 1, Chapter 1. What are the benefits of cloud computing? The first benefit is that is the use of cloud computing is the reduction in upfront capital expenditure on hardware and software deployment. Consumption is usually billed on the utility like telephone bills or subscription like magazine models. Users can terminate the contract at any time and are often covered by SLAs, service level agreements, with the financial penalties. This reduces risk and uncertainty and ensures return on investment. मतलब अगेन आई एम सेइंग दैट क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है हमको शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है तो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो उसके जो हमारे रिसोर्सेज है उसको उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर लगता है उसके ऊपर जो पैसा लगता है वो कम लगता है क्यों कम लगता है क्योंकि हम उसको शेयर्ड चीजों को यूज करते हैं जैसे कि सपोज टेलीफोन बिल्स है या फिर मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन है तो इनका कंजम्पशन जो है इनका यूटिलिटीज जो है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज इट इज बीइंग शेयर्ड ओके सेकेंड इज लोकेशन इंडिपेंडेंस मतलब कहीं भी कोई भी रिमोट लोकेशन पे रिसोर्सेस हो वो अपीयर होता है एज इफ यू आर वर्किंग एट योर कंसोल आपके कंसोल पे ही वर्क हो रहा है ऐसा दिखाई देता है ओके सो location independence as long as there is access to the internet okay increased flexibility and market agility as quick deployment model of cloud computing increases the ability to reprovision rapidly as required फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मार्केट में जो जो चेंजेस रहते हैं या मार्केट में जो जो चीजें हैं या फ्लेक्सिबल मतलब कि अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट दिस कैन बी चेंज दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इट अलाउज एंटरप्राइज टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस आप कोर बिजनेस के ऊपर जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा है आपका मेन फोकस जिसके ऊपर है उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं उसके रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं increased competitive advantage increased competitive advantage means जो एक कंपनी हमको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर जैसे डेटा सेंटर इज द लोकेशन वेयर द डेटा कैन बी स्टोर्ड सेंट्रली सो one organization can provide you storage of data center at some rates and the other organization provides you storage of data center at some other rates so there is a competition among those companies to provide the डेटा सेंटर डेटा स्टोरेज इन द मिनिमम कॉस्ट तो उसके लिए हमको क्या होगा हमको एडवांटेज होगा जितनी ज्यादा कंपनीज अवेलेबल रहेगी मार्केट में उतना हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसको यूसेज करने के लिए then the next point is increase security at a much lesser cost as compared to the traditional अब अगर आप सेंट्रली लोकेटेड डेटा स्टोरेज और सेंट्रली लोकेटेड स्टोर की बात कर रहे हो तो वहां पर सिक्योरिटी प्रोविजंस बहुत हाई होंगे एज कंपेयर टू द सिक्योरिटी प्रोविजन ऑफ अ इंडिविजुअल अगर हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमको एंटीवायरस लेना पड़ेगा डेटा स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए होगा स्पीड चाहिए होगा मेमोरी चाहिए होगा एंटीवायरस चाहिए होगा अदर यूटिलिटीज चाहिए होगा कंप्रेशन यूटिलिटीज चाहिए होगा तो इन सब के लिए कॉस्टिंग भी ज्यादा होगा तो this is the advantage cloud computing provides an advantage over the traditional standalone where the security provision is much higher as compared to the private one easy to maintain as they do not have to be installed on each user's computer हर एक कंप्यूटर पे हर एक मोबाइल के हर एक स्मार्टफोन पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है रिमोटली इट कैन बी एक्सेस यूजिंग सिंपल ऐप और सिंपल लिंकेज okay so these are some of the advantage of cloud computing क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट साइज ये अभी आपको एक एग्जांपल दिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट में क्या रेट है 2015 में कितना था और 2010 में कितना था सो अकॉर्डिंग टू स्टडी global market for enterprise cloud computing services will grow from 12.1 billion in 2010 to 35.6 billion in 2015 कितना इंक्रीज हुआ ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ 12.1 से 35.6 ऑलमोस्ट 13% के नियरली इंक्रीमेंट हुआ है the year on year growth rate will be 43% in 2011 but will decrease in 13% over the next 5 years okay SaaS software as a service will account for 70% of the revenue in 2020
2010 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना ये 70% तक, एंड 30% इज फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज से 70% और इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS से 30% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। कंपोनेंट्स मतलब इसके आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीजें जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। In simple topological sense, a cloud computing solution is made up of several elements, clients and data centers and distributed servers. क्या क्या है इसके अंदर? Clients है, data center है and distributed servers है। तो client and server तो हमको पता है कि ये अगर हमारा cloud computing का environment है तो उसमें दो जो major component है, client और server. Client is one who accesses the who requests for the services, who accesses the services, who avails the services. Who is the server? Server is one which distributes the service, which gives the services, which provides the services, it distributes the services. Distributed server मतलब centrally located server नहीं है, यहाँ पर server कैसा है? Distributed server मतलब सब जगह एक जगह इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज is stored at different servers. Okay, and there is one more component which is called as data center. देखो यहाँ पर data center word है, ये data center. Data center is what? Data center is the location where the information or the data is located remotely, and it appears as if it is available at your console. कैसा appear होता है कि जैसे ये आपके कंसोल पे ही अवेलेबल है। तो कौन से तीन कंपोनेंट हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग के? क्लाइंट्स, डेटा सेंटर and distributed servers. Okay, each element has a purpose and plays a specific role in delivering the functional cloud computing application. इन तीनों का अपना अपना रोल है cloud computing environment में। कौन से तीन components हुए? The three components of cloud computing are clients, data centers and distributed servers. अब clients पढ़ेंगे। The clients in a cloud computing architecture is one which requests for the services to the server. Client क्या करता है? It requests for the services to the server. And then what is mobile thin clients? These are the components under the client. Client कौन कौन से हुए हमारे पास में? The one which avails the services, which request for the services to the server. कौन कौन से डिवाइसेस से हम सर्विसेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं? कौन कौन से क्लाइंट होते हैं? जैसे कि अगर हमारा मोबाइल फोन है, ये एक क्लाइंट हो गया। सो मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूड्स PDAs or smartphones like BlackBerry, Windows Mobile Smartphone or iPhone or Apple phone. These are some of the examples of the mobile. iPads, ये सब क्या है? ये हमारे मोबाइल डिवाइसेस है, स्मार्टफोन्स है, जहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज या मैकिंटोश या फिर एप्पल iOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं. So that works as a client. And what is a client? Client is one which requests for the services. और server क्या होता है? Which serves the services. Again, I'll just give you one example of client and server. देखो, अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, if I go to a restaurant, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? We order for a meal. तो we request for a meal. Okay, हम एक मील के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. मील मतलब खाना. हम लोग बोलते हैं we order our meal, we order our lunch या ब्रेकफास्ट. तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको कि हमको ये चीजें चाहिए, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं. और रेस्टोरेंट क्या करता है? हमारे जो रिक्वेस्ट रहती है उस रिक्वेस्ट की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, मतलब हमको मील प्रोवाइड करता है, हमको खाना देता है. तो हम कौन हो गए? वी बिकम्स क्लाइंट. So who is a client? Client is one which requests for the services to whom? To the server. And who is a server? Server is one which serves the request, which gives the services, which provides the services. तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो क्या बन गया? वो सर्वर बन गया, बिकॉज वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है. ओके, थिन, there is a thin client. Computers are clients are computers that do not have internal hard disk, but rather let the servers do all the work, but then display the information. तो थिन क्लाइंट क्या होता है? थिन क्लाइंट वो होता है जिसमें मशीन्स जो है आपस में कनेक्टेड रहती है, बट जो मेन हमारा थिन क्लाइंट रहता है, क्लाइंट के पास में इंटरनल हार्ड डिस्क नहीं रहती है, उसका जो सर्वर रहता है उसी को ये थिन क्लाइंट जो है
एक्सेस करता है हार्ड डिस्क रिमोटली, और इसको ऐसा लगता है कि मेरे खुद के पास में हार्ड डिस्क है, स्पेस है, मेमोरी है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो हमारी पहले लैब में ऐसा ही था। एक लैब जो थी वो थिन क्लाइंट की लैब बनी हुई थी, जहां पर एक मेन सर्वर था और बाकी के सिर्फ क्लाइंट्स थे, थिन क्लाइंट्स थे, जो हार्ड डिस्क नहीं थी, जिसमें डम टर्मिनल्स कहलाते हैं वो। और वो सर्वर की, जो सर्वर है उसकी हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते थे रिमोटली। ओके, देखो, बट रादर लेट द सर्वर्स डू ऑल द टास्क, सारा टास्क कौन कर रहा है? सर्वर। बट देन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन वेयर द थिन क्लाइंट, ऑन द थिन क्लाइंट सर्वर, मशीन के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है क्लाइंट के ऊपर, और सर्वर जो है उसमें हार्ड डिस्क रहती है। Another is thick client. This type of client is a regular computer using a web browser like Firefox, Internet Explorer to connect to the cloud. अब ये जो thick client है, ये रेगुलर कंप्यूटर है जो नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है और जो ब्राउजर यूज करके क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट को अवेल करता है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग अ क्लाइंट इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। एक हुआ मोबाइल थिन क्लाइंट और एक थिक क्लाइंट। This client are becoming an increasingly popular solution because of their price and effects on the environment. Some benefits of using this thin client include, अब ये thin client के benefits क्या है यूज करने के? लोअर हार्डवेयर कॉस्ट, आपको हार्ड डिस्क की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हार्डवेयर जो है वो कम इस्तेमाल हो रहा है। लोअर आईटी कॉस्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी स्ट्रक्चर कम लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम लग रहा है। Security is high, no need of separate antivirus to be installed on the thin client, server पे install कर दिया automatically, that security provision will be provided to the thin clients. Then security to the data is also one of the added advantage. Less power consumption, power consumption कम है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, तो पावर कंजम्पशन कम है। उसके आसपास जो भी कंप्यूटर पे जो चीजें लगती है मदरबोर्ड पे, वो सब है ही नहीं, तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। ईज ऑफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट, इजीली रिपेयर हो जाता है, और अगर कुछ खराब है तो उसको रिप्लेसमेंट में इजी हो जाता है। द लास्ट इज लेस नॉइस विदाउट अ स्पिनिंग हार्ड डिस्क, लेस हीट इज जनरेटेड एंड क्वाइट फास्टर क्वाइटर फैंस कैन बी यूज्ड ऑन द थिन क्लाइंट। क्वाइटर फैंस जो कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सीपीयू के अंदर होता है, आप देखना, तो वो फैंस की भी जो है वो हीट रिड्यूस करता है, तो नॉइस कम होती है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ थिन क्लाइंट्स। कौन कौन से एडवांटेजेस देखे हमने? वी हैव सीन लोअर कॉस्ट, लोअर हार्डवेयर कॉस्ट, लोअर आईटी कॉस्ट, सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, लेस पावर कंजम्पशन, ease of repair or replacement, less noise. Okay, then the second component of cloud computing is data center. Data center is the collection of servers where the application to which we subscribe is housed. मतलब जो भी हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, डेटा सेंटर इज द कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, अलग अलग सर्वर्स का कलेक्शन है। वहां पर क्या हो रहा है, सारी एप्लीकेशंस जो हम सब्सक्राइब कर रहे हैं वो हाउस की हुई है, वो रखी हुई है सारी एप्लीकेशन। So it could be a large room in the basement of our building or a room full of servers on the other side of the world that we access via the internet. तो ये डेटा सेंटर क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ सर्वर्स जो एक पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बेसमेंट में हो सकता है, या फिर एक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। सो अ ग्रोइंग ट्रेंड इन द आईटी वर्ल्ड इज वर्चुअलाइज्ड सर्वर्स। तो अभी हमारे पास में जो क्लाउड कंप्यूटिंग के डेटा सेंटर्स जो है वो वर्चुअल सर्वर्स है, जो इंटरनेट के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। That is, software can be installed allowing multiple instances of virtual servers to be used. In this way we can have half a dozen virtual servers running on one physical server. एक फिजिकल सर्वर में 6 से ज्यादा सर्वर्स रन हो सकते हैं। कैसे? वर्चुअली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करके जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज डेटा सेंटर। देन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्या हुआ? बट द सर्वर्स डू नॉट हैव टू बी हाउस्ड इन द सेम लोकेशन, ऑफन सर्वर्स आर इन जियोग्राफिकल disparate locations. तो distributed servers मतलब क्या हुआ? The servers are not located at one central location.
It is being distributed according to the location. Location wise अलग अलग location पे ये distribute होता है. That is why it is called as distributed server. So, but for the cloud subscriber, these servers act as if they are hanging away right next to each other. This gives the service provider more flexibility in options and security. For instance, Amazon has their cloud solution in servers all over the world. If something were to happen at one site causing a failure, the service would still be accessed through another site. Also, if the cloud needs more hardware, then they need not throw more servers in the same room. They can add them at another site and simply make it part of the cloud. मतलब Amazon जो है एक बहुत बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, जिसमें सपोज हमको सर्वर्स ऐड करने हैं, तो सर्वर्स ऐड करने हैं, सर्वर्स बढ़ाने हैं, तो क्या करेंगे, उसको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्वर्स है उसको डिस्टर्ब किए बिना और ऐड कर सकते हैं सर्वर्स. तो हमारा क्या होता है इस केस में, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता और एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है. सो वी हैव सीन 3 components of cloud computing. Now, why is cloud computing distinct? अलग कैसे है cloud computing बाकी चीजों से? The cloud computing distinguishes itself from the other computing paradigm like grid computing, global computing, internet computing. ये जो अलग अलग टाइप के computings है, grid computing, ग्लोबल कंप्यूटिंग या इंटरनेट कंप्यूटिंग से कैसे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है. लेट्स सी. It is user-centric interfaces. Cloud services should be accessed with a simple and pervasive methods. User-centric है, simple और pervasive method से इसको access किया जा सकता है. Cloud computing adopts the concept of utility computing. In other words, user obtain and employ computing platforms in computing clouds as easy as they access a traditional public utility. And some of the features of this public utilities are given. तो हमारे पास में जो यूजर सेंट्रिक है, यूजर को किन किन चीजों की जरूरत रहती है, दैट इज द बेसिक मोटो ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. जैसे कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी, कमोडिटी, सेल्स, परचेज, टेलीफोन, दीज आर some public utilities. So it is being connected to, it is providing all these resources, utilities. Who? The cloud computing. It is user specific, user centric. Let's see some of the features of cloud computing services which cloud computing provides. So cloud interfaces do not force users to change their working habits and the environment. मतलब cloud जो होता है वो users को अपना वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए नहीं बोलता है, उसकी जो हैबिट है वो चेंज करने के लिए नहीं बोलता है. रादर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ये चीज जो एनवायरनमेंट है इनको चेंज किए बिना वर्क करता है. So the feature differs. This feature differs cloud computing from the grid computing, as the grid users have to learn new grid commands and APIs to access the grid resources and services. So grid computing में क्या होता है, grid users होते हैं. Grid users उनकी grid commands होती हैं, APIs होता है, application interfaces रहते हैं, तो वो access किए उसे ये differ करता है. Then the cloud client software which is required to be installed locally is lightweight. For example, Nimbus Cloud Kit client size is around 15 MB. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो क्लाइंट साइड का सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत हल्का है. लाइट वेट मतलब कि जब उसको इंस्टॉलेशन करते हैं क्लाइंट बेस्ड तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है. Then cloud interface are the location independent. These are location independent. Geographically वो कहीं भी located हो, but वो ऐसा appear होता है as if it is appeared at your console. So it can be accessed by someone well-established interfaces like web service frameworks and internet browsers. So using internet browsers or web services, these cloud interfaces can be used. Okay. So next thing is on-demand service providing. Okay, on-demand service provisioning मतलब डिमांड के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करना. So cloud computing provides resources and services for users on demand. Users can customize and personalize their computing environments. For example, software installation, network configuration, as users usually own administrative privileges. So according to users need,
वो अपने आप जो यूजर का नीड रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो फ्लेक्सिबल है, वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज। से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, जैसे QoS guaranteed offered autonomous system. Okay, what is QoS? That is the cloud, the computing environments provided by the clouds computing can guarantee QoS for users. Example, hardware performance like CPU speed, IO bandwidth, and memory size. Okay, so cloud computing renders QoS in general by processing service level agreement, SLA. SLA stands for service level agreement. उसके लिए वो agreement किया हुआ है. Autonomous system means which is being managed by itself. Cloud computing is an autonomous system and it is managed transparently to the users. Users के लिए transparently खुद ही manage किया जाता है. That is by auto. Auto means self, autonomous. Hardware, software and data inside the cloud can automatically reconfigure. अपने आप configure हो जाता है, consolidate हो जाता है. Present a single platform image finally rendered to the users. Then you have something called scalability and flexibility. Scalability मतलब कितना उसको widen कर सकते हैं, कितना खींच सकते हैं. Flexible means according to the environment how it can be changed. Okay. First movers in the cloud. क्लाउड में जिसने जिन कंपनीज ने काम किया था, जिसने काम किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं. So first one is Amazon. आपने सुना होगा Amazon. Amazon was the first company to offer the cloud services to the public. Public को क्लाउड सर्विसेज सबसे पहली सर्विस जिसने प्रोवाइड किया अमेजोन है. कौन कौन से ऑफर्स करता है ये सर्विसेज? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2, दैट इज ऑफर्स वर्चुअल मशीन्स एंड एक्स्ट्रा CPU साइकिल्स फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस. वर्चुअल मशीन्स जैसे हमने अभी अगर आपने लाइनक्स पढ़ा हो तो लाइनक्स में था वर्चुअल मशीन, जिसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है. Simple storage services that is up to 5 GB in size. 5 GB in size. इतना इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकता है. लाइक जीमेल जो है आपका, गूगल में रेडिफ मेल है, हॉटमेल है, बाईमेल है, Yahoo Mail hai. These provides the simple storage services. Okay. Then we have simple queue services. Okay. Simple queue services. It allows users machine to talk with each other using the message passing APIs, application interfaces. So using message passing interfaces, the information can be exchanged. The machines can talk with each other. SimpleDB, simple database, a web service for running queries on structured data in real time. So this service works in close conjunction with the Amazon Simple Storage service, that is Amazon S3, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, and collectively providing the ability to store and process and query data sets in the cloud. Okay, the second example is Google. गूगल का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? क्लाउड कौन से क्लाउड मूवर्स मींस क्लाउड के कौन से एग्जांपल है? एक अमेजॉन है, एक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज अजूर है, विंडोज एसक्यूएल सर्विसेज, डॉटनेट सर्विसेज. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द क्लाउड. कैन एनीबडी टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? गूगल का फुल फॉर्म मेरे को बताना कल. What is the full form of Google? Okay, Google is the second cloud company, cloud environment. So in contrast to Amazon's offering in Google's App Engine, on Google we get root privileges, but on App Engine we cannot write a file in our own directory. So Google removed the file write features as a security measures, and to store data we must use Google's database. अब Google क्या करता है? आप Google के अंदर कुछ भी कंटेंट्स टाइप करो, सर्च इंजन, Google इज बेसिकली सर्च इंजन, तो उसके ऊपर आप टाइप करो तो वो अपने डेटाबेस में से सब इंफॉर्मेशन निकाल के देता है. सो ये प्रोवाइड करता है हमको रीड ओनली सर्विसेज. आप उसको सिर्फ उसमें का डेटा रीड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू राइट द इंफॉर्मेशन यू शुड हैव प्रॉपर प्रिविलेजेस फॉर दैट.
So Google offers online documents and spreadsheets and encourages developers to build features for those and other online softwares. Using its Google App Engine, Google reduced the web applications to a core set of features and built a good framework for delivering them. Google also offers handy debugging feature. Handy debugging means उसको अंदर कुछ corrections करना है, कुछ changes करना है, so that also can be provided by the Google. So third type of cloud is called as Microsoft. Microsoft Cloud Computing Solution is also called as Windows Azure. ये देखो नाम, Windows Azure किसको बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट को भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज अजूरे बोलते हैं। Amazon जो है वो फर्स्ट जो है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। An operating system that allows organization to run Windows application and store files and data using Microsoft data centers. So using Microsoft data centers, this provides a cloud computing environment and it is also called as Windows Azure. Okay. The key components of Microsoft computing solutions includes Windows Azure, Microsoft SQL services, Microsoft .NET services, and live services. So these are the services these are the components which are being provided by the cloud computing.